हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है द कार्टेशियन सिस्टम एंड लाइन ग्राफ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, quadrants, drawing graphs. Now introduction. In the earlier classes we have studied about the point, lines and geometrical representation. Now we shall learn about the Cartesian coordinates system and the representation of a line and points on the Cartesian plane. Now coordinate axes. Consider two mutually perpendicular straight lines x dash ox and y o y dash intersecting each other at a point O. These lines are called coordinate axes. This one. The line x dash ox is called the x-axis and the line y o y dash is called the y-axis. The point O where the lines x dash ox and y o y dash intersect is called the origin. The plane of the paper containing both the coordinates axes is called the coordinate plane. On right hand side of the y-axis, every endpoint of a square on the x-axis represent a positive integers, whereas on the left hand side of the y-axis, every endpoint of a square in the x-axis represent a negative integer. Above the x-axis, every endpoint of a square on the y-axis represents a positive integer, whereas below the x-axis, every point of a square on the y-axis represent a negative integer. Positive, positive x-axis, y-axis. X-axis negative and y-axis negative. Now, ordered pair. A pair of two numbers a and b listed in a specific order is called an ordered pair a comma b, with a at the first place and b at the second place. Now coordinate of a point. Let x dash ox and y o y dash be the coordinates axis and p be a point on the graph paper such that p is at a distance of a units from the y-axis and b units from the x-axis. Then we say that p is a and b are the coordinates of p, this one. Here a is called the x coordinate or abscissa of p and b is called the y coordinate or ordinate of p. Now quadrants. The coordinate axis divided the plane of the graph paper into 4 regions called the quadrants. Look at the following chart. Region, quadrant, signs of coordinates. X, O, Y. First quadrant, positive, positive, this one. Y, O, X dash. Second quadrant, minus and plus, this one. X dash, O, Y dash, third quadrant, minus minus, both x and y be negative. Y dash ox is fourth quadrant, plus and minus, this one. इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल 1. State the quadrant in which the points with the following coordinates lie: A 5 8, B -3 and 4, C -5 and -8, D 6 and -8. सॉल्यूशन करते हैं इसका. A. The given point is A, 5 and 8. Here both the coordinates are positive, so the points A lie in the first quadrant. B. The given point is B, -3 and 4. Here x coordinate is negative while y coordinate is positive, so the given point B lies in the second quadrant. C. The given point is C, -5 and -8. Here both the coordinates are negative, so the point C lies in the third quadrant. D. The given point D is 6 and -8. Here x coordinate is positive while y coordinate is negative, so the given point D lies in fourth quadrant. Now example 2. Plot the following points on a graph paper: A 3 3, B
5 एंड -6, C -2 एंड -5, D -4 एंड 3। सॉल्यूशन करते हैं। Let x dash OX and y dash be the coordinates axis. The points may be plotted as follows. हमने क्या किया, x axis और y axis, x dash OX and y dash ले लिया। Now first A point is 3 3 means x का कोऑर्डिनेट भी 3 है और y का कोऑर्डिनेट भी 3 है। नाउ यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे। B is 5 and -6, x is positive 5 and B is negative, so -6 and 5, तो B कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा। C -2 and -5, दोनों नेगेटिव है तो किस में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। माइनस क्या है, -2, हियर इज -2 एंड -5 इज हियर, तो यहाँ पे आ जाएगा C कोऑर्डिनेट हमारा। D -4 एंड 3, दैट मीन्स x हमारा नेगेटिव है 4 एंड y हमारा पॉजिटिव है 3, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। नाउ A, on the x-axis take 3 units to the right of y-axis and then on the y-axis take 3 units above the x-axis. Thus we get the point A 3 3. B, on the x-axis take 5 units to the right of the y-axis and then on the y-axis take 6 units below the x-axis. Thus we get the point B 5 and -6. C, on the x-axis take 2 units to the left of the y-axis and then on the y-axis take 5 units below the x-axis. Thus we get the point -2 and -5. D, on the x-axis take 4 units to the left of the y-axis and then on the y-axis take 3 units above the x-axis. Thus we get the point D -4 and 3. Now example 3. Write down the coordinates of the points P, Q, R and S from the following figure. Now P कहाँ है हमारा, P हमारा x एक्सिस पे 2 और B पे हमारा 3। Q हमारा है x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे -3 एंड 2। R हमारा x एक्सिस पे है -4 और y एक्सिस पे भी है -4। S x एक्सिस पे हमारा कितना है 4 और y एक्सिस पे है -2। इसी तरह से सॉल्यूशन करते हैं इसका। A, from P draw PA perpendicular to x axis and PB perpendicular to y axis. Here OA is 2 units, OB is 3 units. Coordinate of P are 2 and 3. Similarly, we can write the coordinates of Q are -3 and 2. C, coordinates of R are -4 and -4. D, coordinates of S are 4 and -2. Now next is drawing graphs. Example करते हैं। Example 1. Construct a simply graph by using the equation y is equals to 3x plus 2. Solution करते हैं इसका। We substitute different values of x into this equation and find the corresponding values of y. X 3x, y is equals to 3x plus 2. Now x हमने ले लिया क्या, -1 0 1 and 2. Now we put the value of x is -1, then 3x is equals to -3. जब हमने x की वैल्यू -1 ली तो यहाँ पे पुट की तो कितना आ गया हमारा -1। कैसे, y is equals to 3x plus 2। x की वैल्यू कितनी ली हमने -1, इसको 3 से क्या किया मल्टीप्लाई +2, तो -3 + 2 इज इक्वल्स टू -1। तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई -1। इसी तरह से जब हमने x की वैल्यू कितनी ली 0, तो 3x 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और यहाँ पे कितना आ गया हमारा 2। नाउ 1 लिया, 3 × 1 इज 3 एंड 3 + 2 इज 5। 2 लिया, 2 3 = 6 एंड +2 इज 8। This table gives a list of ordered pair of coordinates. That is, when x is -1, y has the value -1, giving the point -1 and -1. Each of these points satisfies the equation y is equals to 3x plus 2. The points are plotted in the Cartesian plane. These points are joined together which give a straight line. हमने स्टार्ट किया यहाँ से हमारा दोनों -1 था, यहाँ प्लॉट किया, देन x हमने 0 लिया तो y हमारा 2 आया,
x हमने 1 लिया तो y हमारा 5 आया, x हमने 2 लिया तो y हमारा कितना आया, 8 आया। तो जहां जहां प्लॉट किया उसको हमने एक लाइन से ड्रॉ कर दिया। नाउ एग्जाम्पल 2, कंसीडर द रिलेशन बिटवीन द पैरामीटर and the side of a square given by p is equals to 4a and draw a graph of the function. Solution करते हैं। The given function is p is equals to 4a. For different values of a, the corresponding values of p are given below. a and p is equals to 4a. When a is 0, p is also equals to 0. When a is 1, p is equals to 4. When a is 2, p is equals to 2 4s are 8. When a is 3, p is equals to 4 into 3 is 12. When a is 4, 4 into 4 is p is 16. On a graph paper, plot the points O 0 0. फर्स्ट हमारा दोनों 0 0 है, देन हमारा क्या है 1 and 4. हमारा x कितना है 1 और y कितना है 4. When our x is 2, y is 8. When our x is 3, y is 12. When our x is 4, y is 16. तो इस तरह से प्लॉट करके हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ की। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग। कंसीडर द रिलेशन बिटवीन द एरिया एंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर गिवन बाय a is equals to a square and draw a graph of this function. तो इसमें भी a की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से हमें निकलेगी कैपिटल ए, मीन्स एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे। इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।